Okay, so hello everyone. I hope all of you are doing good. जो भी बच्चे क्लास में जुड़ रहे हो, just do one thing. मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि everyone, all of you can hear my voice or not, if the screen is properly visible or not. Just let me know these things, and after that we can start. बेसिकली आज हम लोग पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स शुरू करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है TIFR के एग्जाम्स के लिए भी, जो फिलहाल में हाल ही में आ रही है, एंड फॉर द एग्जाम्स ऑफ IIT JAM एंड CSIR नेट एंड गेट, कोई भी एग्जाम्स हो, क्वांटम मैकेनिक्स में जो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग वही चीज देखेंगे और पढ़ेंगे। तो जल्द से जल्द आप लोग क्लास में जुड़ जाइए, उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स इनिशिएट, शुरू करते हैं। आई होप मोर और लेस पीपल हैव जॉइंड। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्लास, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। सो लेट्स इनिशिएट postulates of quantum mechanics. Postulates of quantum mechanics. That's what I'm trying to say. Very important thing. जिसपे सबसे पहला पोस्टुलेट जो आता है वो है सबसे फर्स्ट पोस्टुलेट, पोस्टुलेट नंबर 1। उसपे कहा जाता है द स्टेट ऑफ अ फिजिकल सिस्टम एट टाइम t0, द स्टेट of a physical system at time t equal to t0 can completely be specified or is defined by specifying a can completely be specified. The state of a system at time t equal to t0 can be defined by specifying a ket which is basically a vector psi of t0 belonging to the state space, belonging to the Hilbert space, or the Hilbert space corresponding to a particular state is called state space belonging to the Hilbert space or state space. स्टेट स्पेस, फुल स्टॉप। तो अगर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, तो कोई भी एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बारे में अगर हमें कुछ पता करना हो, उसके डायनामिकल वेरिएबल्स कैसे टाइम के साथ इवॉल्व कर रहा है, ये सब पता करना हो, अगर उसके डायनामिकल वेरिएबल्स के मेजरमेंट करना हो, तो एक चीज हमें चाहिए होता है जो उस
सिस्टम का वोटर आईडी कार्ड मान सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का स्टेट क्या है, तो वो स्टेट अगर तुम्हें पता है तो तुम बाकी के सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में निकाल सकते हो। So if you know the state of the system, then all the rest of the information you can find out about the state. So the state of a system can completely be specified by defining a cat, or can completely be defined, the state of a system at t equal to t0 can be defined by specifying a cat psi of t0 belonging to the state space. So this is the first postulate, और ये postulate बहुत ही ज़्यादा important है। This is a very important postulate. क्योंकि स्टेट के अलावा क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ नहीं है, एक पार्टिकल का स्टेट ही एवरीथिंग है। मान लो कि स्टेट जो है पार्टिकल का वो उसका वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ अ पार्टिकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। स्टेट क्या है, एक पार्टिकल का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक चीज है। तो एक पार्टिकल का स्टेट उसका काइंड ऑफ बट ऑफ कोर्स जो स्टेट है इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, it's entirely a function of time, so as time changes this one also changes। तुम लोग वो चीज तो पता कर ही सकते हो कि स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ टाइम। जस्ट बिकॉज जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहेगा पार्टिकल का स्टेट भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। अगर एक सिस्टम के बारे में तुम पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हो तो जैसे ही टाइम चेंज हो रहा है तो पार्टिकल का स्टेट भी चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टफ रिगार्डिंग द पोस्टुलेट। तो एट टाइम अब कैसे चेंज होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे या अभी बात नहीं करेंगे उसके बारे में कि कैसे चेंज होगा। बट यस, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा पार्टिकल का स्टेट चेंज होगा, नो डाउट रिगार्डिंग दिस मैटर, ठीक है। सो द स्टेट ऑफ अ सिस्टम कैन कंप्लीटली बी स्पेसिफाइड at each time t by a state vector psi of t in Hilbert space. So that's an important stuff. That's an important stuff. Or any superposition of a state vector is also a state vector. So, but I'm not going into that thing much. So, belonging to the state space or Hilbert space. तो बेसिकली इसके बाद दूसरा जो पोस्टुलेट आता है so definitely it is entirely a function of time. So therefore the state of a physical system, therefore it's entirely a function of time. Therefore it's entirely a function of time only. So as time will change, the state will accordingly vary. It means it will vary with t. It means it will vary with time. सेकेंड पोस्टुलेट के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, जो हमें ये बताता है दैट करस्पॉन्डिंग टू एवरी फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो करस्पॉन्डिंग टू एवरी फिजिकली मेजरेबल, फिजिकली MEASURABLE measurable quantity, corresponding to every physically measurable quantity A called an observable or a dynamical variable. डायनामिकल वेरिएबल। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टाफ कि कोई भी सिस्टम का ऑब्जर्वेबल या डायनामिकल वेरिएबल क्या है, जो भी क्वांटिटी तुम फिजिकली मेजर कर सकते हो, जैसे कि उसका पोजीशन, उसका मोमेंट, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, उसका स्पिन, उसका टोटल एनर्जी, उसका काइनेटिक एनर्जी, उसका पोटेंशियल, जैसे एवरीथिंग
दैट इज अ फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी। हम लोग इस फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी को ऑब्जर्वेबल कहते हैं या डायनामिकल वेरिएबल कहते हैं। मैं यूजुअली द टर्म ऑब्जर्वेबल यूज करूंगा, डायनामिकल वेरिएबल यूज नहीं करूंगा। उसके डायनामिक्स के जो वेरिएबल्स होते हैं उसको ही ऑब्जर्वेबल कहा जाता है। ये सारी फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है। अगर किसी भी एक मैकेनिक्स को आप पढ़ रहे हैं, डायनामिक्स को पढ़ रहे हैं, तो उसी सिस्टम के बारे में हम लोग यही सब सवाल पूछते हैं। पोजीशन क्या है, मोमेंटम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या है। वी आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन दोस क्वांटिटीज। So corresponding to every physically measurable quantity A, called an observable or a dynamical variable, there exists a linear Hermitian operator A cap. There exists a linear Hermitian operator A cap। अगर तुम्हारा ऑब्जर्वेबल A है तो उसका करस्पॉन्डिंग लीनियर हर्मिटियन ऑपरेटर को हम लोग A cap से रिप्रेजेंट करेंगे। A cap whose eigenvectors form a complete orthonormal basis of the state space, whose eigenvectors form a complete orthonormal, whose eigenvectors form a complete orthonormal basis of the state space, जिसको हम लोग हिल्बर्ट स्पेस भी कहते हैं एक्चुअली। जस्ट बिकॉज हिल्बर्ट स्पेस में स्टेट वेक्टर्स रहते हैं इसलिए उसको स्टेट स्पेस कहा जाता है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि स्टेट स्पेस का मतलब है हिल्बर्ट स्पेस of the state space, Therefore, any arbitrary state of a physical system can be written. Therefore, any arbitrary state of the physical system of the physical system Therefore, any arbitrary state of the physical system which can be represented by psi of t0 at time t0 Therefore, any arbitrary state of the physical system which can be represented, any arbitrary state of the physical system given by psi of t0, psi of t equal to t0 at time, any arbitrary state of the physical system psi of t0, I think it will be better notation, at time t equal to t0 can be represented as a linear combination of the eigenvectors of A, as a linear combination of the eigenvectors of A cap। तो कोई भी डायनामिकल वेरिएबल हो उससे करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर होगा। उस ऑपरेटर के जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो हिल्बर्ट स्पेस का बेसिस फॉर्म करेगा। अब हिल्बर्ट स्पेस का बेसिस फॉर्म करना मतलब तुम्हारे सिस्टम का जो भी स्टेट है जिसको तुम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ दिस आइगन वेक्टर्स, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द आइगन वेक्टर्स ऑफ A cap। इसके बाद पोस्टुलेट नंबर 3 जिसमें कहा जा रहा है
जिसमें कहा जा रहा है कि इफ यू मेजर एन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी ए, इफ you measure an observable quantity A, अगर तुम एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी A को मेजर कर रहे हो, then the only possible result of measurement, अगर मान लो ये वाला है, यहां पे मुझे थोड़ा सा बताना चाहिए था कि what does this one means, इसका थोड़ा अगर मैं मतलब बता दूं, हैंग ऑन, मैं थोड़ा सा अगर सेकंड पोस्टुलेट का मतलब बता दूं तो वो ऐसा होगा कि सपोज I should write it like with some different color. Suppose or let us consider a physical system. Let us consider a physical system whose corresponding state space या Hilbert space या Hilbert space is four-dimensional. Therefore, any observable of this system and therefore corresponding to any observable of the system, we will have a linear Hermitian operator. Therefore, corresponding to any observable, of this system, you will have a linear Hermitian operator, any observable A of this system, you will have a linear Hermitian operator A cap, which will be a 4x4 matrix. Which will be a 4x4 matrix. Therefore, it will have four linearly independent eigenvectors with four eigenvalues. Therefore, suppose A cap phi n gives you a n phi n where n equals to your 1, 2, 3, 4. That means it has four eigenvectors, phi 1 with the eigenvalue a1, phi 2 with eigenvalue a2, phi 3 with eigenvalue a3, phi 4 with eigenvalue a4. All I'm trying to say, this phi 1, phi 2, phi 3, phi 4 form a basis of the Hilbert space. Therefore, phi 1, phi 2, phi 3, phi 4, इससे जो सेट बनता है, the set represents
form a basis of this four-dimensional Hilbert space. Therefore, any vector of the Hilbert space can be written as a linear combination of this four. Therefore, any vector belonging to the Hilbert space which can possibly represent a state of the physical system, which can possibly represent therefore any vector belonging to the Hilbert space which can possibly represent a state of the physical system can be written as कैसे लिख सकते हो of the physical system at time t equal to t0 at time t equal to t0 can be written as कुछ बच्चों को शायद दिख नहीं रहा होगा मैं उनके लिए थोड़ा सा है ना can you all not see the screen properly? Yes, मैं थोड़ा अपना वीडियो ऑफ कर देता हूं so that you all can see. Any vector belonging to the Hilbert space which can possibly represent a state of the physical system at time t equal to t0 can be written as psi at t0 is equal to summation over n equals to c1 phi 1 plus c2 phi 2 plus c3 phi 3 plus c4 phi 4 that can be written as summation over n equals to 1 to 4 cn phi n जहां पे cn कैसे लिखते हो phi n psi of 0 where cn तुम्हारा क्या है phi n psi at t0 which represents the projection of that is actually equals to projection of psi of t0 along the direction of phi n. Projection or component of the vector psi of t0 along the vector phi n, that is nothing but the projection or component of the vector psi of t0 on the vector phi or amount of phi n vector that is contained. इसको ऐसे भी लिख सकते हो amount of phi n vector that is contained within psi of t0. That's all I can write. That is contained within psi of t0. After that, I can come to the third postulate, which says the measurement of a physically measurable quantity
So if you measure an observable quantity A, if you measure an observable quantity A, then the only possible results of measurement, possible result then the only possible result of measurement is one of the eigenvalues of the corresponding Osler orbital area. Is one of the eigenvalues of the corresponding 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 observable operator A cap of the corresponding observable operator A cap. Therefore, if you measure A, then you will get any one of the eigenvalues of A cap as a measured value of A. Therefore, if you measure A, then you will get any one. If you measure A, then you will get any one of the eigenvalues of A cap. Eigenvalues of A cap as a measured value of A, as MEASURED measured value of A, full stop. But before the measurement, it is impossible to say in advance, but before the measurement, it is impossible to say in advance that which of the various eigenvalues of A, that which of the various eigenvalues of A cap you will get as the result of measurement. You will get as the result of measurement.
as a result of measurement. So if you measure A, then you will get any one of the eigenvalues of A cap as a measured value of A. But before the measurement ये बोल पाना बहुत मुश्किल है कि उन आइगन वैल्यूज में से कौन सा आइगन वैल्यू तुम्हें मिलेगा एज रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। इसको अगर हम लोग अगर इस चीज को थोड़ा सा तोड़ ताड़ के लिखे तो ये कैसा दिखेगा। इस चीज को अगर हम लोग थोड़ा सा तोड़ ताड़ के लिखे तो ये कैसा दिखेगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा कि therefore suppose इस पिछले एग्जांपल को ही लेते हैं। You are measuring the observable A. Suppose considering the previous example, your system belonging to a 4D Hilbert space. Therefore, considering the previous example, where your system corresponds to a 4D Hilbert space. Now, if you measure the observable A, now if you measure the observable A at any time, then you are bound to get any of the 4 eigenvalues of A. 4 eigenvalues of the operator A cap namely A1, A2, A3, A4. But which one of these 4 eigenvalues you will get as a result of measurement? But which one of these 4 eigenvalues, which one of these 4 eigenvalues A1, A2, A3, A4 you will get? Which one of these 4 eigenvalues A1, A2, A3, A4 you will get as a result of, but which one of these 4 eigenvalues A1, A2, A3, A4 you will get as a result of measurement? You can't predict before the measurement. Which one of the 4 eigenvalues A1, A2, A3, A4 you will get as a result of the measurement can't be predicted. Predicted before the measurement से पहले नहीं बता सकते। Even God can't tell. Even God can't tell. भगवान भी नहीं बता सकते हैं कि कौन सा आइगन वैल्यू मिलेगा।
कौन सा आइडेंटिटी मिलेगा भगवान भी नहीं बता सकते। इवन गॉड काउंट। ठीक है। और यहाँ पे दिस इज बेसिकली द फैक्ट कि तुमने मजाक में लिखा है, क्योंकि तुम जब एक कॉइन को थ्रो करते हो तो वो हेड आएगा या टेल आएगा डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर, हवा कैसा है, जब फेंक रहे हो तो कैसे गिरेगा, बट वो इंसान के लिए बताना इम्पॉसिबल है ना। तो हमारे लिए तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, बट वो एक्चुअली डिसाइडेड तो वैसे ही हो रहा है ना कि हवा कैसा है, कैसे उसको पलट रहा है, तुम कितने फोर्स से उसको दिए थे। सो डेफिनेटली ऑल दिस थिंग्स मैटर्स, दैट्स ऑल। तो दिस इज पॉस्टुलेट नंबर 3। हम लोगों ने 3 पॉस्टुलेट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पॉस्टुलेट 1, पॉस्टुलेट 2, पॉस्टुलेट 3, और ये पढ़ने के बाद जो आता है दैट इज पॉस्टुलेट नंबर 4। तो ये जो पॉस्टुलेट 4 है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पॉस्टुलेट 4 एंड पॉस्टुलेट 5। पॉस्टुलेट 4 है कि कोई भी एक आइगन वैल्यू मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, और पॉस्टुलेट 5 है कि किसी भी आइगन वैल्यू मिलने के बाद सिस्टम का स्टेट क्या हो। ये पॉस्टुलेट 4 एंड 5 हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वी विल सी दिस पॉस्टुलेट्स 4 एंड 5 ऑन द नेक्स्ट क्लास। या हो सकता है आज के मास्टर क्लास में मैं करा दूं। ठीक है, तो मैं इसको यहां पे खत्म कर रहा हूं। मैं बच्चों को बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे CSIR ने दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए बहुत ही बढ़िया सा एक खबर है। टेस्ट बुक सुपर कोचिंग ने कोर्स का प्राइस को रिड्यूस करके 5279 कर दिया है। तो जो भी बच्चे दिसंबर 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए ये बूस्टर कोर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज दिस कोर्स कंटेंट्स all the detailed theory lectures in the recorded format with their corresponding PDF। लाइव क्लास में बहुत सारे PYQ सॉल्व कराए गए हैं जो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल है, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट दिए तुम अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो तुम्हारे चांसेस क्रैक करने के हैं 20%, क्योंकि जितना तुम मॉक टेस्ट दोगे उतना तुम्हें अपने सिलेबस के बारे में पता चलेगा, टाइम कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में पता चलेगा, कौन सा सेक्शन पहले करना है कौन सा सेक्शन बाद में करना है अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस उसके बारे में पता चलेगा, तुम्हारे किस पोर्शन में स्ट्रॉन्गर ग्रिप है तुम सॉल्व कर सकते हो ज्यादा, किस पोर्शन में कम स्ट्रॉन्गर ग्रिप है, कौन कौन से सब्जेक्ट तुम्हारे हथियार है जिनको आगे लेके तुम चल सकते हो एग्जाम में, उन सब्जेक्ट्स के आंसर पहले करने हैं। ये सब चीजें तुम्हें मॉक टेस्ट देने से ही समझ आएगा। सो मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द रिविजन पर्पस एज वेल। तो मॉक टेस्ट यहाँ पे बहुत सारे तुम्हें मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स PYQ बुक्स हैं, PhD मेंटरशिप प्रोग्राम है, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल एट अ प्राइस ऑफ 5279। बट एक बात मैं कह दूं, अगर तुम्हें थोड़ा सा और कम प्राइस में चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू यूज द प्रोमो कोड विच इज माय नेम SOURAV टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। मतलब इस प्राइस से भी कम प्राइस में तुम्हें मिल जाएगा। और जो बच्चे HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए कोर्स का प्राइस 3499 है। एग्जाम का डेट हालांकि में डिसाइड नहीं किया गया है, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, बट मैं तो कहूंगा आप लोग प्रिपरेशन मत छोड़िए, आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। किसी भी टाइम वो लोग डेट अनाउंस कर देंगे और उस टाइम पे ऐसा ना हो कि आपका प्रिपरेशन तैयार नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और काफी कम में कोर्स मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस। नाउ एक सवाल जो बच्चों के दिमाग में आते हैं वो ये है कि सर जी आपने तो कह दिया लेकिन कोर्स को खरीदे कैसे। तो उसके लिए मैं बता देता हूं, कुछ नहीं करने, गूगल क्रोम में जाओ और जाके लिखो CSIR नेट सुपर कोचिंग। जैसे ही लिखोगे सबसे पहला वाला हाइपरलिंक पे क्लिक कर दो। क्लिक कर देने के बाद दिखना एक पेज खुल जाएगा। जो पेज खुलेगा उस पेज में थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आओ। जैसे नीचे आओगे यहाँ पे दिखेगा CSIR नेट फिजिकल साइंस बूस्टर कोर्स दिसंबर 2024, इसमें क्लिक करो, बाय नाउ पे क्लिक करो, फिर अपना फोन नंबर देके कंटिन्यू पे क्लिक करो, आएगा प्रोसीड टू पेमेंट। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट आएगा उस पे क्लिक करना, देखना आएगा यूज प्रोमो कोड। जैसे प्रोमो कोड दोगे मेरा नाम SOURAV तो प्राइस और रिड्यूस्ड होकर मैक्सिमम डिस्काउंटेड प्राइस में तुम्हें कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यस ऑफ कोर्स मेरा जो ये लेक्चर है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसका PDF उठा सकते हो। Thank you very much. I'm ending the class here. We will again meet on the next session, that is tomorrow at 10 AM in the morning. और इसके नेक्स्ट वाला जो पोस्टुलेट है वो हो सकता है आज मैं मास्टर क्लास में करा दूं, तो आप लोग जरूर मास्टर क्लास ज्वाइन कीजिए जो 11 बजे है। थैंक यू वेरी मच।